Good evening, friends, and welcome to the session. So I'll wait for a few seconds. Yeah, Venkat. So did you all see how important the reading of the open interest was today? We had it on Nifty. So in the morning itself, I have not changed the chart. The highest open interest was in 24,000 strike price. Okay, I have not shared my screen. Pardon me for that. I'll do it right now. So 24,000 maximum OI build up tha. And you saw today that prices 1 second. I'm just sharing my other screen. So give me a minute. So prices did held that level throughout the day. How many of you observed that? Either give me a yes or a no. This was the level we had talked about, friends. Okay, still not shared the screen. Done. Yeah, this was the level 24,000 where the maximum OI buildup was. How many of you observed this? Give me either a yes or a no. That is why combining price action along with the OI makes lots of sense in the volatility. No doubt you had the support, but along with the support, you had maximum OI buildup, which was 24,000 level. So now that's all history. Let's approach the market fresh. I think today the attendance is dropped. Okay, now it's increasing. Yeah, उर्मिला देखा था ये लेवल. देखिए यहाँ से भी अगर फ्यूचर्स का भी आपका ट्रेड रहे तो यू गॉट अ नाइस लिटिल टिप. 100 पॉइंट मिला यहाँ से. I leave it to you how you trade, but trade levels to levels with a view and with a plan. So let me go to my platform. I'll just put my phone on silence because मैं करता हूँ, but I think message वाला मैंने बंद करना भूल गया था. Done, I've done it. I think something wrong with the camera. बहुत hazy आ रहा है. It's fine if my face is not there. It's okay. Charts are clear, na everybody? Okay. So now let's go to Nifty. Before that, I'll read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. नमस्ते कमलेश जी. 24,000 होल्ड किया सर. एक 100 पॉइंट का स्पाइक मिला था वहां पे. एंड सी ऐसे लेवल है ना, तो सेम डे एक्सपायरी नहीं ट्रेड करके यू कैन गो टू द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी. That's just a small this thing from my side. So now this is Nifty. What is price doing? Price is doing nothing. एक चीज हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी जो हम फॉलो कर रहे हैं वो 50 दिन का एवरेज. वाई 50 दिन का? बिकॉज वो भी रेलेवेंट है एंड प्राइसेस आर क्रिस क्रॉसिंग द एवरेज. व्हेनेवर प्राइसेस आर क्रिस क्रॉसिंग द एवरेज, टेक्निकली हम उसको विपसॉ बोलते हैं. जब भाव कोई भी पर्टिकुलर एवरेज को विपसॉ करती है तो हमें उसका नोट लेना चाहिए. So far 50 DMA has not breached 23,830. तो यहाँ से भी करीब करीब डिप है. So उसको सपोर्ट लेंगे और ये के बेस भी है. So now the purpose of average is done. Let me remove it. क्या देखते हैं मार्केट आज मिडिल बोलिंगर बैंड या 220 DMA के नीचे बंद हुआ, एकदम वहीं के आसपास ही बंद हुआ. और अभी एक चीज आप मार्क करो, वोलेटिलिटी स्क्वीज कर रही है यहाँ पे भी. वोलेटिलिटी स्क्वीज करने का मतलब है कि ये जो साइडवेज रेंज इतने दिन से एक ट्रेंडिंग मूव आएगा, अप या डाउन नहीं बोल सकते. ऑल वी कैन से इज अ ट्रेंडिंग मूव इज ड्यू इन द मार्केट्स. ओके, नाउ या हियर विल नॉट टॉक इंट्राडे. सो नाउ देखिए एक पैटर्न जो मार्केट में बन रही है थोड़ा मुझे परेशान भी कर रही है. सी पैटर्न्स तो बनती रहती है, पैटर्न नीड्स कंफर्मेशन. ये एक बेस बना है मार्केट का यहाँ पे. So ये बेस में कॉन्फ्लुएंस है, प्राइस बेस है प्लस यू हैव 50 DMA. तो मार्केट क्या ये बेस तक आएगा? लग तो रहा है. नाउ अगर ये बेस टूट गया तो इट विल बी बैड फॉर द मार्केट्स. व्हाई? बिकॉज देखिए आई माइट बी जंपिंग टू अर्ली, बट मेरा काम है यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करना. ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है. क्या ये राइट शोल्डर बन रहा है? अगर यस तो मार्केट में थोड़ा नेगेटिविटी आ सकती है. अभी बना नहीं है वो. जब तक ये बेस नहीं टूटेगा हम कुछ बोल नहीं सकते. टिल द बेस इज नॉट ब्रीच्ड
वी आर ट्रेडिंग अ साइडवेज प्राइस एक्शन. बार बार मेरा सिग्नल जा रहा. Got it, everybody? Please give me a yes or no. या स्टिल बेस इज इंटैक्ट, इसलिए मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ. आई जस्ट रिमूव दिस. जस्ट चौकर ना कर रहा हूँ सर. गॉट इट धीरज विजय? अगेन व्हाट्स हैपनिंग? कुछ टच कर रहा. वन सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट. टुडे माय सेकंड स्क्रीन इज नॉट interfering. Yeah, now I think it will be okay. So I'll again share my screen. So ध्यान रखो ये बेस, या अभी ठीक हो गया धीरज, आई थिंक अगेन. या तो ये बेस पे हमें ध्यान देना है. सो देखिए, और एक चीज है कि ये गैप इंटैक्ट है. तो अभी मार्केट में देखिए 3% जो हमने कल बात की है, 6% ओवरऑल ऑन रही, 3% स्विंग वाला मार्केट है. सो आर वी हेडिंग टुवर्ड्स दिस लेवल? लॉजिकली यस. प्राइसेस आर स्टिल इन अ बेसिंग. अगर बेसिंग में प्राइस में लास्ट सपोर्ट के पहले तो कोई लो या 50 डीएमए बेस के पहले कोई भी इंडिकेटर या डिसीजन मेकिंग टूल है नहीं हमारे पास. सो आई विल स्टिक टू दिस बेस एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न. देखिए आज बहुत सारा सीखने को है आपको यहाँ पे. एक तो 50 डीएमए बेस है, दूसरा है आज की जो कैंडल है, इट्स एन इनसाइड डे. इनसाइड डे का मतलब क्या है? इनसाइड डे का मतलब है आज का जो भाव है, टुडेज ट्रेडिंग एंटायर वाज विद इन यस्टरडेज रेंज. सी दिस. तो इसको हम बोलते हैं इनसाइड डे. आप बोलोगे ठीक है, इनसाइड डे बता दिया, अभी क्या? इनसाइड डे का मतलब है अगर मार्केट लो तोड़ता है तो मार्केट में एक डाउन स्विंग रहेगी, और एल्स एक कंसोलिडेशन का फेज रहेगा. यहाँ पे मार्केट बीच बीच में इनसाइड डे देती रहती है. गॉट इट? इनसाइड डे एवरीबडी, गिव मी अ यस. सो अगर ये इनसाइड डे ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से फिर तो यहाँ तक कोई सपोर्ट है नहीं मार्केट को, और हमें अभी इतने दूर भी नहीं जाना है रेजिस्टेंस के लिए. ये इनसाइड डे के हाई लो को आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लो फ्रॉम द स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव. तो मैं चेंज कर ले रहा हूँ इमीडिएट, जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट. मैं बोलता हूँ एस और रेजिस्टेंस आर. तो ये हमारा निफ्टी का सेटअप है गिवन फॉर द डे. इफ इट ब्रेक्स दिस ऑन द डाउन साइड, देन ये बेस की तरफ मार्केट आएगा, और एल्स ये कल का जो रेंज था वो रेंज पे आप एक्सपेक्ट करो एक वोलेटिलिटी रहेगी. एवरीबडी क्लियर अबाउट निफ्टी? सो कैन आई मूव टू बैंक निफ्टी नाउ? आई थिंक बहुत क्लैरिटी है मार्केट में. मतलब क्लैरिटी इन द सेंस, रेंज है 3% का, रेंज है, बेस है, इनसाइड डे ये टूटा तो नीचे जाएगा तो मार्केट, और कल का जो हाई है उसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप मान के चलो. So I have a question from Dheeraj says, sir, just to remind you again, please kindly try to arrange. I'll do that, Dheeraj, fundamental analysis for investor series at Incred Stock or YouTube channel. I'll try to do this. Right? Shabaki, you can say it's a bearish Harami. Yes. But you see, it needs confirmation, which is break of the low, Shabaki. Copy, Shabaki, give me a yes. So that's Nifty. Take a screenshot if you want. Now let's move to Bank Nifty. बैंक निफ्टी में इफ यू सी 200 डे, जैसे निफ्टी का 50 दिन का एवरेज का एक सपोर्ट है, बैंक निफ्टी 200 दिन का एवरेज पे स्ट्रगल कर रहा है. सो बैंक निफ्टी स्ट्रगलिंग एट और अराउंड द 200 डे मूविंग एवरेज. सो टेक्निकली हम उसको विप्सॉ बोलते हैं जब इस तरह का स्ट्रगल चल रहा रहता है. तो So Bank Nifty is whipsawing. आज का जो low है is exactly 200 DMA. How many of you observed this? Today's low was exact 200 day moving average. That is why I say in morning sessions में अगर कोई एवरेज आ रही है आपके पास तो उसको आप एक लाइन ड्रॉप कर दो वहां पे. So I just drop a line over there.
देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी तक वॉलेटिलिटी दिख रही थी, अभी ये वॉलेटिलिटी के पीछे एक पैटर्न दिख रहा है। सो व्हाट इज दैट पैटर्न? नाउ एक चीज आप मार्क करो, जो ट्रेंड है वो डाउन है, दिस इज द लो हाई लो, सो लोअर हाईज और लोअर लोज, और यहां से इफ आई ज्वाइन बोथ द लोज and stretch it forward and join the upper lows, parallel करता हूं। So now Bank Nifty has formed a channel. Everybody clear? At least pattern तो दिखा Bank Nifty में. From sideways consolidation, it has taken a shape of a falling channel. So what is the significance or importance of a falling channel? The significance is that अभी ये range में ही रहेगा। अगर breakout हुआ तो I am not expecting some big runaway. हो सकता है ये सब swing high के बंद किया तो अपसाइड आया, यहाँ पे तोड़ दिया तो डाउन साइड। सो यू हैव टू यू कीप दिस फल्क्रम पॉइंट विथ यू। So the moment you have a pattern, first thing you should do is measure the depth of the pattern. Why we measure the depth of the pattern? हम लोग क्यों measure करते? It just tells us that as a swing trader और overall view market की range क्या है। अगर range नहीं समझ में आती तो हम trade क्या करेंगे? So जैसे पैटर्न दिखे आप maximum depth कर लो, कोई हाई और लो से measure कर लो। So now Nifty will remain volatile in a 3% range. That's it. अभी तक पता नहीं चल रहा था। नाउ दिस इज द मैक्स, इसको हम पैटर्न डेप्थ बोलते हैं। आई विल राइट इट डाउन फॉर यू। दिस इज द पैटर्न डेप्थ। So Bank Nifty is now established a pattern depth of 3%, which means volatility के लिए prepared रहो आप सब। एक दिन 1% ऊपर, दूसरे दिन 1% नीचे, फिर 1% ऊपर, ऐसे कर करके 3% के रेंज में मार्केट में ग्राइंड चलेगा। क्लियर? या इफ इट टेक्स द अपसाइड ऑफ द रेंज तब हमें जाके एक बार देखते हैं कि भाव कहाँ तक आ रहा है। बट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम नो, आई जस्ट पुट दिस एज अ रेजिस्टेंस, दिस एज अ सपोर्ट। सो बैंक निफ्टी में भी जैसे निफ्टी में हमने किया था, द सेम वे वी आर गोइंग टू डू फॉर बैंक निफ्टी। इट इज एक आप एक दायरा नक्की कर लो, ये है इसका आर रेजिस्टेंस, ये इसका एस सपोर्ट, एंड पैटर्न डेप्थ इज 3%। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? और जो फलक्रम पॉइंट है, पिवट पॉइंट है, वो है 200 डे मूविंग एवरेज का। बार बार विपसॉ कर रहा मार्केट, हियर आल्सो इट केम टू 200 डीएमए एंड बाउंस बैक शार्पली। यहाँ पे आसपास आया बट नॉट रेलेवेंट। हियर इट केम टू 200 डीएमए and break. Again there was a reversal. Once again it is at a 200 day moving average. Right? So 3% का depth है and market is, bank nifty is midway. जब भी ओके, आई जस्ट शो यू हाउ टू डू इट। जब भी आप चैनल बनाओ ना, एक चैनल में ऑलवेज एक मिडिल लाइन रहती है, तो आपको करना क्या है, डबल क्लिक करना है, चैनल के सेटिंग में जाना है एंड मिडिल लाइन ड्रॉप कर देना। सो मिडिल लाइन इज अ मिड पॉइंट। 3% का डेप्थ है तो ऊपर का जो है वो 1.5% रहेगा आपका, नीचे का हाउ मच इट विल बी 1.5%। गॉट इट नाउ? एवरीबडी क्लियर? राइट नाउ वी आर मिडवे। तो यहाँ से 1.5% अप 1.5% डाउन की वॉलेटिलिटी के लिए प्लीज तैयार रहो सब। एवरीबडी क्लियर? गिव मी आइदर अ यस और अ नो। And how many of you read today's Substack note on this thing, which was range trading? And now I will also ट्रेडिंग टाइटन जो हमारी मैगजीन है उसके इश्यू 2 रिलीज हो गया। सो आई हैव गिवन यू द लिंक of the issue, right? So make sure you do it. So as I said, I want to keep these sessions very very crisp। 15 मिनट मतलब 15, कभी मैं 2 मिनट एक्सीड भी देखिए ये सेशंस का मतलब है मैं आपको एक फूड फॉर थॉट्स देता हूँ, फिर आप अभी सेशन आप बंद मत कर दो। यू स्पेंड अनदर 15 मिनट्स 30 मिनट्स एंड ट्राई टू वर्क अपॉन इट। जब तक आप वो नहीं करोगे, ट्रेडर आपको बनना है, मेहनत आपको करनी है। आई कैन जस्ट डू अ फाउंडेशनल लेवल वर्क फॉर यू इन दिस सेशंस, फाइन। सो
पैटर्न बना दिया आपके मैक्सिमम डेप्थ। अभी आप देखो बैंक निफ्टी में सारे बैंक निफ्टी स्टॉक्स वन बाय वन देखो, एच डी एफ प्राइवेट बैंक्स, एच डी एफ सी, ICICI, एक्सिस, कोटक में क्या है, वहां पे तेजी है कि नरमी है, वहां पे नरमी है तो 200 डे टूट जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, नाउ इज जॉब फॉर यू टू डू ऑल दोज थिंग्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस सेशन फ्रेंड्स। आई वॉन्ट you to be very very strong in terms of price action patterns and everything. So make sure once I end the session, please do give a comment, good, bad, or ugly. So we'll again meet tomorrow in the morning at 8:45. एटलीस्ट लेवल तो काम कर रहे हैं। निफ्टी में जो मार्क किया था वो किया था, बैंक निफ्टी में ना, लेट्स सी। निफ्टी में कोई क्या पैटर्न अभी तक नहीं बन रही है जो, ठीक है, मैं इंट्राडे कल देखते, सो आई एम नॉट डोंट वांट टू मिक्स इट हियर, विल कीप इट फॉर ब्रॉड मार्केट्स। थोड़ी लर्निंग भी यहाँ पे करेंगे। जैसे पैटर्न डेप्थ पता चल गया आपको, कभी भी चैनल बनाओ तो ऑलवेज एक मिड पॉइंट डालना मत भूलो चैनल में। मूव कभी 1 and 2 सेकेंड एंड नहीं आता, मिड पॉइंट पे रुकता फिर आता है। सो ऑल दोस थिंग्स, दिस इज थिंग। धीरज सेज मेनी बैंक्स क्वार्टरली रिजल्ट्स केम अप टुडे, ट्रैक रखो सर रिजल्ट्स का। So that's all from my side today, friends. Thanks. Have a nice day. We'll again meet tomorrow at 8:45 in the morning. Make sure once I end this session, do post a comment, good, bad, ugly. I leave it to you.